Hello students. So there is a DPP we have and it is related to oxidation number concept and balancing, and some important part of the oxidation reduction reaction that you know is disproportionation. तो आपको DPP का फिलॉसफी और मेथड तो मालूम ही है. आप पहले क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लो, फिर समझ लो, ट्राई कर लो. यू कैन पॉज द वीडियो इन बिटवीन. फिर हम थोड़ा थोड़ा हिंट लेंगे एंड फिर हिंट के बाद ट्राई कर लो. And after that we'll have detailed solutions, right? तो चलो शुरू करते हैं. पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे. What is the change in the oxidation number, right, of carbon? Definitely it's a compound of methane. What is the change in the oxidation number when methane is burnt in the excess of oxygen? यानी जब मीथेन को जलाया जाएगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो जो भी प्रोडक्ट बनेगा उसे आइडेंटिफाई करने के बाद आप ये पता लगाएंगे कि उसके ऑक्सीडेशन नंबर में क्या चेंज आया, राइट. सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिलीज्ड. सी, जब भी ऑक्सीडेशन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं. सो फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिलीज्ड when 0.5 moles of nitrogen is converted into NO2 gas. Third question is talking about balancing. What is the minimum integral coefficient when this reaction is balanced? Zinc plus HNO3 gives zinc nitrate plus N2O plus water. But finally, fourth question says, in the disproportionation reaction of iodine, what fraction, that means what parts by fraction of I2 gets oxidized? Now you try this. अब आइए हिंट देखते हैं. पहले क्वेश्चन में आप ध्यान से देखिए, जब मीथेन जलाई जाएगी so you will have this kind of reaction. Methane will be reacting with oxygen to give a gas. You know this. We are not writing the complete reaction, we are just writing the product CO2 and definitely H2O. इसको बैलेंस के बिना आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि इसमें कार्बन के ऑक्सीडेशन नंबर में क्या चेंज आया. अब आइए फुल सोल्यूशन देखते हैं. आप देखिए यहाँ मीथेन का ऑक्सीडेशन नंबर हम कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर -4 लिख सकते हैं. Why? Because in methane there are 4 hydrogen atoms attached to carbon और हम ये जानते हैं हाइड्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन. तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों, हम हाइड्रोजन पे +1 चार्ज दे सकते हैं जो इसका नॉर्मल वैलेंसी है. सो डेफिनेटली कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ हो गया -4, राइट. तो दिस इज कन्फर्म. ये मीथेन वाला पार्ट आप देख रहे हो. अब राइट हैंड साइड में देखिए, इससे CO2 प्रोडक्ट बना है. अगर आप ऑक्सीजन को -2 चार्ज देंगे तो यू विल गेट +4 ऑक्सीडेशन नंबर फॉर कार्बन. यू कैन also see from the Lewis dot structure of this. If oxygen has a -2 charge, which is its basic oxidation number, then carbon will have +4. अब आप देखिए जब +4 और -4 इसका ट्रांजिशन हुआ -4 से +4, so you can see the change in oxidation number is this. Delta oxidation number is final oxidation number minus initial oxidation number. So that will give what? That give a +8. So there is a 8 change, right? This is the first question we have done. अब आइए सेकेंड क्वेश्चन का हिंट देखते हैं. क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नॉट नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डायरेक्टली. दैट मीन इट इज आस्किंग द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर रिलीज्ड when half mole of N2 gas is converted into NO2. तो अगर हमें ये पता चल जाता है कि N2 से NO2 बनने के लिए कितना ऑक्सीडेशन नंबर चेंज आया है, तो हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए होंगे. अब आइए डिटेल में देखते हैं. अगर आप ध्यान से देखो यहाँ नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, राइट, बिकॉज नाइट्रोजन इज इन एलिमेंट्री स्टेट. Confirmed, right? अब यहाँ पे आप देख सकते हैं if oxygen charge is -2, then you have nitrogen oxidation numbers to be +4, right? So for one nitrogen atom you can see, right? You can say for one nitrogen atom 4 electrons are released, right? That means for one N2 8 electrons are released. So for 1 mole N2, how many electrons are released? 8 Na.
and finally if it is half mole, that is 0.5, right? If it is 0.5, then that will be 4 Na. So you got this. So 4 Na electrons for 0.5 mole N2. This is confirmed. अब आइए थर्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं. What is the minimum integral coefficient? This means whenever you balance the equation, you add integral coefficient. यहाँ fractional coefficient नहीं चलते. So what is the minimum integral coefficient, right? When you balance this reaction. Okay. इसमें hint रहेगा. HNO3 is playing two roles. One HNO3 is going here, and some HNO3 is going over there. So now let's have a try. So पहला part देखिए, if zinc is getting oxidized, so zinc is requiring some HNO3 to become zinc nitrate. So let me do this oxidation. So it is ZnNO3 whole twice, and then you write here 2H plus. So you balance this, this is 2. So you can clearly see here 2 electrons are involved, right? Zinc is being oxidized. अब दूसरा पार्ट देखिए, when HNO3 is getting reduced, because HNO3 is the oxidizing agent, so it will get reduced to what? It will get reduced to NO2, right? Sorry, N2O. So you write N2O, then you adjust this 2 here. Now you adjust for oxygen. Here how many oxygen? 6. 2 3 is 6. 1 here, so 5 H2O. Now hydrogen here are 10. 2 already there, so it is 8 H plus, right? And definitely you have how many electrons? You have 8 electrons. So when you combine these two reactions, then you multiply this reaction by 4 to adjust for that. So you will finally get this reaction, 4 times zinc plus 8 HNO3 from this side and 2 air, so that is 10 HNO3. Then you have 4 times zinc nitrate. Then you have, so you did this 2H plus will be adjusted with this 8H plus, it will be cancelled out. So what you remain is this N2O plus 5H2O. Now you can clearly see the 10 is the coefficient for HNO3 in this. So we have identified the answer is to be this. अब आइए चौथा सवाल पढ़ते हैं. बहुत ही प्यारा सवाल है डिस्प्रपोर्शनेशन का. डिस्प्रपोर्शनेशन होता है जब एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी हो और रिड्यूस भी हो जाए. तो सवाल पूछ रहा है इसका कितना हिस्सा इसमें गया है. सो दिस इज द हिंट. नाउ लेट अस ट्राई दिस. अगर हम इसको ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से करें, सो I2 का ऑक्सीडेशन नंबर हम जानते हैं, दिस इज 0. Here I minus, oxidation number is clearly -1, and if you take off all the oxygen, then you will get this to be I5 plus. So in order to balance this charge, you just have 5 I minus here, and there are how many oxygen iodine? There are 6. So you put 3 I2. So this will also give me 6 iodine atoms. So you can see out of 6 iodine, 5 iodine is going into reduced form, and 1 iodine is going into oxidized form. So what is the ratio? That is 1 by 6th part is going here, right? There is the answer. So it's the beauty of these DPP. Now you practice it and revise your redox and balancing. Thank you.